हे दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके साथ आया हूँ। तो मैं एक चीज़ का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, वो है होहेम isteady X मोबाइल गिम्बल। इसको मैं अमेज़ॉन से मंगवाया है। इसका प्राइस पड़ा है 4919 रुपीज़। तो आप लोग भी अगर इसको बाई करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, चीप रेट का बहुत बेस्ट क्वालिटी का मोबाइल गैम्बल है। तो ज़्यादा कुछ ना बोल के मैं इस गैम्बल का अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और देख लेता हूँ इस बॉक्स में क्या क्या दिया है। ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा होहेम का isteady X गैम्बल। तो जल्दी से मैं इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो देख लेता हूँ मैं इसमें क्या क्या फीचर्स दिया है। पहले इसका वेट है 259 ग्राम्स, फोल्डेबल डिज़ाइन, 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन, माउंटेन मोड, क्विक रोल स्विच, ऑटो फेस ट्रैकिंग, ये सब मोड इसमें दिया है। तो जल्दी से मैं इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और देख लेता हूँ इसमें क्या क्या दिया है। तो दोस्तों, ये रहा मेन गैम्बल। इसको मैं पहले साइड में रख देता हूँ और इसके साथ दिया है एक छोटा सा ट्राइपॉड। और इसके साथ मिलता है सी टाइप केबल जो चार्जिंग के लिए काम आएगा। और ये रहा इसका स्ट्रैप, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स और इसका नीचे के पोर्शन में कुछ दिया है। ये रहा ये पाउच होहेम का बैंडिंग के साथ, और ये रहा इसका मैनुअल बुक। तो पहले मैं इस चीज़ों को साइड में कर देता हूँ। The Hohem isteady X gimbal stabilizer. This lightweight gimbal is equipped with enhanced DC brushless motors and an isteady 3.0 anti-shake algorithm that eliminates shakes and produces smooth footage. The product has a dimension of 17.9 into 7.9 into 3.9 centimeters with a weight of 259 grams. The 3-axis stabilizer features 3 motors like pan, roll and tilt that can provide high-quality photos and videos. It comes with a non-orthogonal axis design that captures more pictures and makes use of ultra-wide lens smartphones. The moment mode comes with 7 one-tap templates like Inception, Time-lapse, Dolly Zoom and Panoramas. The isteady 3.0 automatic upside-down detection and auto-rotation technology will rotate the phone 270 degrees to 180 degrees automatically and helps to capture even extreme low-angle shots. The gimbal helps to shoot a smooth time-lapse picture or a video using smart motion time-lapse. It shoots Inception video automatically using auto-inception mode. This gimbal switches horizontal from vertical by pressing the power button once. Using the selfie stick mode, a gimbal works as a selfie stick even at low power. The built-in 2000 mAh battery offers working time up to 8 hours. This gimbal supports iPhone and Android phones with a max payload of 280 grams weight. The thickness of 11 mm and width of 58 mm to 89 mm.
The gimbal stabilizer has a new app named Hohem Gimbal for a personalized parameter setting with one click for firmware upgrade and 6-side online calibration. Powering on isteady X, you need to unlock the motors, mount your phone, and balance it on the gimbal. At first, you need to loosen the knob and unfold the gimbal. Do not forget to tighten the knob. Secondly, unlock the pan motor by rotating the handle to the left. Make sure all 3 motors are unlocked. Rotate the phone holder, ensuring that the Hohem logo face towards. Attach your phone, ensuring that the camera is on the left. Put your phone stuck in the bottom of holder and pull the head of holder to mount your phone. If your phone falls to one side on the gimbal, you need to slide the holder to the middle of phone until the phone stays still without falling to any sides. Clench the holder, ensuring that your phone is clinged to the rubber mat. Long press the power button to power on isteady X. Please be noted that isteady X will beep after powering on. If any one of the motors is unlocked, the Bluetooth light turns red, and isteady X will turn off automatically. Unlock all the motors, so isteady X will be able to power on. Thanks for watching. तो दोस्तों देखा आपने चीप रेट का बेस्ट क्वालिटी का मोबाइल गैम्बल है। और जो लोग नया नया यूट्यूबर बना है और जो रील्स बना के फेसबुक और इंस्टाग्राम में छोड़ते हैं, उन लोगों के लिए ये एक बेस्ट चॉइस होगा। और इसका रिव्यू वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। उससे पहले इसको मैं 1 या 2 वीक यूज़ करके देख लेता हूँ। उसके बाद ही इसका रिव्यू वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों यहीं पर ही आज इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड बाय।